So hello students, as prelims 22 is approaching and many of you must be worried that how you should go for RCs, should you join any classes for RCs and what exactly RCs are. So RC is reading comprehension, which is a section of your CSAT paper of prelims examination. Now let's not create a fuss about RCs because it is something for which you don't need any kind of course, you don't need any kind of proper coaching for reading comprehensions, okay? Just you need to understand what RC mean. As I am saying, RC is reading comprehension. So that means you have to read the passage and comprehend it. Now where is the crux, like where is the story wherein we are talking about reading comprehension? So रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा क्या है जो यूपीएससी आपसे चेक करना चाह रहा है. सो बेसिकली हाउ यू ड्रॉ द इन्फ्रेंस while reading the passage, that skill UPSC is checking. Now there are different sections, like आपके पॉलिटी से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, आपका सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, फिलोसफी से. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर coming up and the passages are different accordingly. अब बात आती है कि पैसेज का जो टफनेस है वो कैसा है. If I talk about the passages जो आप 10th में क्या करते थे या 12th में क्या करते थे, things were different that time. क्यों? क्योंकि या तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलता था, राइट? और या जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आपको मिलता था लास्ट पैराग्राफ में. जनरली ऐसा ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, होता था. या आपने कोई एक वर्कबुक करी है जिसमें लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, तो जनरली उसी में से कॉम्प्रिहेंशन उठ के आ जाएगा. बट हियर आई वुड एम्फसाइज ऑन unseen passages that you haven't seen before, and the questions will be asked from there. Now what will interfere here is your mugging, because जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं यूपीएससी के, तो आपका जो नॉलेज बेस है वो ऑलरेडी इतना एनहांस हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करता है आपके आरसीज में, राइट? हाउ आई एम गोइंग टू टेल दैट इन डिटेल. जैसे कि आपका कोई एक पैसेज आया जिसमें ऑथर कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑथर ने जो कहा है दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट नॉलेज यू पोजेस. सो अनफॉर्चुनेटली यू विल एंड अप राइटिंग व्हाटएवर your mind will say, not what the passage is saying. That is why it is important what kind of inference you are drawing from the passage. Okay, so that is why reading comprehension. So first part is reading and then comprehending. You're not supposed to mug up any comprehension. ये नहीं सोचना है कि हम 4 कॉम्प्रिहेंशन कर जाएंगे, ये जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसमें से हम कॉम्प्रिहेंशन कर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा और उसी में से कहीं ना कहीं घूम के आ जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू कम लाइक दैट, बिकॉज सेक्शंस ऑफ करंट अफेयर्स विल आल्सो बी पिक्ड, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पिक्ड अप होंगे, एनवायरमेंट भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर कि अगर आप मग कर भी लेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर. नाउ व्हाट इज गोइंग टू मैटर हियर इज योर रीडिंग स्पीड, योर रीडिंग रेट. अब जनरली क्या होता है, जब हम नॉर्मली एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो हमारी स्पीड होती है स्लो, बट जब जैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जितना हम आर्टिकल रीडिंग में जाते हैं, और आप लोग जो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग ऑलरेडी इतनी रीडिंग हैबिट में, मैं एज्यूम करती हूँ कि आप होंगे कि आपकी रीडिंग रेट अच्छा होगा. अगर नहीं है देन यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स का रीडिंग रेट अलग आएगा. अगर आप हिस्ट्री का कोई पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो तो उसका रीडिंग रेट अलग आएगा, वो आप जल्दी पढ़ोगे, लाइक वर्ड्स पर मिनट जो आप पढ़ोगे दैट विल बी वेरी क्विक बिकॉज यू ऑलरेडी नो थिंग्स बिफोर. बट करंट अफेयर्स का अगर कोई पैसेज उठ के आता है, यू माइट नॉट बी एबल टू आंसर दैट इन दैट इफेक्टिव मैनर. So there are different genres of these passages like polity, environment, science and tech, current affairs. So for every single genre you need to have a proper reading rate. All right. So I will be discussing here about the comprehension and its different categories, the type and structure of the questions. By vocabulary is going to play a very vital role.
how you are able to understand the core theme of the comprehension, what should be the ideal reading speed, and the various examples which have come up previously, and the tips and methods which are to be adopted. So now people say, कि आपको 5 मिनट में सब कुछ पता लग जाए कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है. Within 5 minutes you can never get the tips of the comprehension. Okay, so it is a kind of elimination game which is going to come with practice. So we'll be discussing in detail the various methods that you can follow which can help you achieve better score rate. So now, motto of RC. First is to recognize explicitly stated elements in the passage. जो already clearly visible हैं उन elements को recognize करना. Secondly, to understand the assumptions underlying statements or arguments in the passage. अब आपने एक तो होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दिख रहा है, एक होता है आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कि ये कहना क्या चाह रहा है, एंड देन to understand the implications of those statements or those arguments. So these are highly correlated that you need to fetch out. And सबसे ज़्यादा important है उसके लिए vocabulary. Like if I talk about vocabulary आपके लिए क्यों required है? You need to practice on daily basis some new words which you should incorporate in your notebook or in your diary, and those words you should find out synonyms and antonyms. अगर आप दो synonym और antonym भी उसके लिए fetch out करते हैं, so it will enrich your vocabulary, and ultimately while you are doing the passages and if synonym and antonyms are being asked, you will very quickly correlate and answer it very effectively. Okay, so now there is no certain theory of comprehension that will lead you to right answers. It is an art, and art will come eventually with lot of practice and time. Even though UPSC's comprehension is of moderate level, it's not that CAT level, so but every single mark counts, right, and the rank varies. So it is important that it is going to create a difference between being selected or preparing again for next year. So me being the faculty, I will never recommend you to go in that manner that you take it easy, so that you are ultimately ending up in preparing again for next year. Not at all. Okay, so here are the following tips before practicing the actual passage. Practice reading editorials in newspapers. So practice reading editorials in newspapers while reading, and watching discussions on Lok Sabha TV, RS Tava TV to improve your language skills, because they are the kind of discussions that come in that can really help you. Now steps involved are read the passage completely. जो भी आपको comprehension दिया हुआ है, जो भी passage आपको दिया हुआ है, उसको proper तरीके से पढ़ो, आँख खोल के. ओके, एंड आपका उस टाइम पे जो assumption level है ना, वो zero होना चाहिए. Never assume anything. Be alert and conscious while processing the passage, and keep a track of time. Very very important is keep a track of time, which I had discussed prior, that reading rate plays a very vital role. तो reading rate क्यों important है कि जितना क्विकली आप कर पा रहे हैं उतना आपका बेटर रिजल्ट आएगा. तो अब बेटर रिजल्ट में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर जितना क्विक पढ़ रहे हैं और आप कॉम्प्रिहेंड ठीक नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो आपके रीडिंग rate should be equally proportional to your comprehension also, that you are comprehending it well. So general comprehension जो होता है, carry question in the form of passages relating to general current affairs, like topics आ गए different dimensions के, humanities as I discussed, natural sciences, social sciences. So candidate is either required to answer correctly the most logical assumption or find out the crucial message conveyed, ultimately the crux. So you will get although the Hindi translations of the same which will help you out. So आपके पास जो passages होंगे वो science passages होंगे, social science passages होंगे, business passages होंगे. So we'll be discussing them individually, and how you should go about it, we'll discuss that. So जो English comprehension है ना, वो that forms a very small part, and the questions are very few. So it is noted that the questions are based on passage English to test the comprehension of the English language, so that अगर हिंदी उसमें आपको हिंदी translation नहीं मिलेगा. Okay. So types of questions are inference based, core theme, logical, vocabulary based. These are the steps to follow. Read the passage analytically, मतलब form your analysis, note down, note the central idea of the passage. Assess the question. See in which of the above mentioned types of question fall into. Your strategy will vary.
use the passage instead of giving the answers based on your memory. Read the passage. It is just like open book test, और open book test के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बट आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई आई एम गाइडिंग यू थ्रू द प्रोसेस दैट रिक्वायर्स यू टू nail this process of reading comprehension. ओके, सो आप अपनी वोकैबुलरी कैसे एनरिच कर सकते हैं, है ना. वर्ड पावर मेड इजी आप फॉलो कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपको थीम को. मतलब these are the different things that we are going to cover up in our next session, wherein how you should practice, what kind of methods you should follow, what are the tips and tricks that are to be followed, and we'll be practicing all the passages like here with answers, and why that particular answer is being chosen, and why it is not as per what are your expectations from that question, that this should be the answer, but this is the answer as per the author. So you need to go by the author, otherwise you will lose marks. So you can see we'll be practicing this now, and then with explanation and every single thing, we are going to do all these passages in our upcoming classes. So this is what we are going to proceed towards. Apart from that, in the end, we'll be discussing about the following lessons that we ultimately come up with in doing the comprehension. Always choose the explicit, जो आपको clearly दिख रहा है उस पे आप जाओ, instead of going towards the implicit के अंदर क्या है, आपको जो clearly answer दिखा रहा है, बता रहा है, go by that. Be careful of extreme and emphasizing words like only, necessarily, permanent, totally, completely. Be careful of that. Okay, be careful with the keywords. Keywords are what? There are certain words which have a predefined meaning, so be very particular with that. So first you should eliminate and then you should choose. While reading, try to get the essence and evaluate the options, and then stick to what the passage tells you. Keep a check on general and overarching statements. That's it. Thank you.